Namaste ji, namaste. So Transfer Property Act Section 5. First and foremost, why are we studying this section? In your semester exams, I mean even for judiciary, for anything, why is this section important? Law entrance में अगर आपको एक question याद हो, which of the following does not constitute as a transfer of property? नीचे वो 4 options देते थे, उसमें से एक option होता था will, या कभी कभार होता था gift. Gift तो नीचे है, which was the incorrect option. A will. Why? Thanks to this section. So now, why are we studying this? So as usual, why are we studying this section? So that we can understand what do you mean by transfer of property, not as per English, not as per layman common sense, but as per law. And what is the law? What is the Transfer of Property Act? It's as simple as that. So in law, always remember, जो किताब या जो act जो terms को define कर रही है, we have to stick to that. Nothing else. Leave your brains behind when it comes to definitions. Now, what exactly is property? Well, they haven't defined it anywhere in the act. Point number 1 that you can mention in your answer. Always do mention this. Well, the term property is not defined anywhere in the Transfer Property Act. So the Transfer Property Act doesn't really give us exactly a clue as to what property, what exact property are they basically wondering about. Then we come to transfer. Now, what does this mean? अब पहली बात तो हमें property नहीं पता, but property usually आपको पता ही है. I'm not going to go into those details. But transfer का क्या मतलब है? चलिए transfer पे आने से पहले, उस कहानी पे आने से पहले. Then here is we're talking only about living person transferring the property to a living person. मतलब जो खरीद बेच जो हो रही है, वो दो living persons के बीच में हो रही है. Interviewers याद है law entrance में से again. Something related to the Transfer of Property Act. I mean, almost I think you will find quite a lot of questions that were in your law entrance were hiding under the garb of common legal GK or common legal knowledge. They come from the Transfer of Property Act. All right. Then we come to another thing that you're going to mention in your answer is, okay, what does this living person mean? That company and association of persons is included under this term? Yes, it is included, but then obviously उनके laws, the procedures are different. But वैसे अगर मैं कहूँ generally speaking, they are included under the meaning of this living person. Alright. Now, अब transfer property कैसे हो सकती है? या gift के द्वारा होगी, या will के द्वारा होगी, या inheritance के द्वारा होगी, या relinquishment के द्वारा होगी, या sale के द्वारा होगी. तो अब ऐसे इतने सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही तरीके they are only covered by Transfer Property Act. Rest have their own individual acts from where you cover them from. Alright. Now for example, now gift. Transfer Property Act के अंदर ही section 122 to 129 dedicated sections towards gift. But if we talk about will, then we have to go to Indian Succession Act 1925. So because will, remember living person, so will was that correct basically option which of the following is not for the conveyance or transfer of title or whatever it was in the law entrance, right? तो will नहीं आती section 5 के अंदर. एक बात तो हम clear कर लें. एक point number 1 क्यों? क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट आती है. अब मुस्लिम्स के अंदर तो कुरानिक लॉ है, हिंदूज के अंदर उनके अपने पर्सनल लॉ है, कैसे कैसे डिवाइड होगी, कैसे कैसे विल में न्यूमेरिकल्स आते हैं ना फैमिली लॉ 2 के अंदर, राइट? तो ये तो बात तय हो गई कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से इनका ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट नहीं कवर करेगी, सेक्शन 5 डज नॉट कवर इट. नाउ द की क्वेश्चन as to why in the bloody world are we studying this section is, does this transfer of property, does it create a new title? Does that, or does it create a new interest? Does it? Common sense says yes. Obviously if you're creating a new title or creating a new interest कौन सा वाला? ब्याज वाला, compound interest, simple interest? No. I'll just get to what interests are. But yes, a transfer has to create a new title, create a new interest. Use this terminology in your answers, even in your judiciary mains, and you will find that you are much better than the competition. Okay. For example, let's say that you go to a tenant, आपके कमलानगर North Campus में बहुत सारे, and landlord. You go as a tenant, and then landlord को आप पे दया आ जाती है, so he just gives you permission to to stay here, stay at his property. Does that amount to a transfer of property? No, obviously. But when he gets into a lease agreement with you,
when he basically tells you that now you'll pay me rent and then you can stay here, and then वो आपका agreement sign होता है 11 महीने के लिए, right? तब क्या है? Is that a transfer property? Let's see. When he is giving his property to you as a PG or a paying guest, right? He is transferring the right to possess and enjoy in your favor. जो उसके पास right था, he is transferring that. So he is transferring what we call as an interest. So see, every owner of a property has 3 basic rights. What are the 3 basic rights? 3 basic rights is interest and real rights. Interest, अब हम कहते हैं कि जी इंटरेस्ट क्या होता है और रियल राइट्स क्या होते हैं. हिंदुस्तान में हम इंटरेस्ट कह देते हैं, रियल राइट्स हम इंग्लैंड में कह देते हैं. सो एज सिंपल एज दैट. मतलब रियल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी इंग्लैंड में हम रियल राइट्स कहते हैं, यहाँ पे हम बेसिक राइट्स को, वो जो 3 है उनको इंटरेस्ट्स कह देते हैं. तो पहला बेसिक राइट क्या है? आपका ओनरशिप, दैट इज राइट टू टाइटल. सेकंड राइट क्या है? एक्सक्लूसिव राइट टू पोजेशन एंड एंजॉइंग द प्रॉपर्टी. थर्ड राइट क्या है? राइट टू एलियनेट इन व्हाटएवर मैनर दैट यू विश टू. नाउ व्हेन यू ट्रांसफर ऑल ऑफ दीज 3 राइट्स, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. मीनिंग आपने सब कुछ सामने वाले को दे दिया कि जी आपको हमारी मुबारक हो. लेकिन अगर आप इसमें से सिर्फ एक राइट ट्रांसफर करते हैं, you're transferring an interest. Alright, you're transferring an interest. अब एक कीवर्ड है सेक्शन के अंदर, is or to himself. Alright, or to himself. or to himself के अंदर क्या मतलब है? सेक्शन के अंदर आप पढ़ेंगे कि जी or to himself. अब आपको or to himself में लगेगा यार ये क्या चक्कर है, क्या मैं एक ही आदमी अपने आप को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा सकता हूँ? नहीं, डिफरेंट कैपेसिटी में ट्रांसफर करा सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट यू आर एन ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, बट देन यू ट्रांसफर इट ओवर टू योरसेल्फ एज अ ट्रस्टी. सो नाउ अर्लियर यू आर द ओनर, नाउ यू आर अ ट्रस्टी. तो टेक्निकली स्पीकिंग तो आपके बीच में ही हो रहा है ना, बिटवीन योरसेल्फ. तो इसीलिए ये शब्द हैं जुडिशरी मेंस के लिए. इन 2 शब्दों को नोट डाउन कर लीजिए इस पूरे सेक्शन में से. ऑलराइट, अब हम आते हैं विदाउट गोइंग इनटू द केस लॉ. केस लॉ वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो, so that you have everything is basically in your head. So what I used to do was teach you section in the same video, go to the case law, but then वो काफ़ी hodge podge हो जाती थी, fit नहीं आ पाता. Then people used to complain कि handwriting बहुत छोटी है. So now I've divided this section. Now we'll go to the case law. Case law next video in the playlist. Of course you'll have to check the playlist in these series. अब क्या बताइए कि जो partition होती है को पार्टनर्स के बीच में, लेट से कर्ता ने कह दिया जी अपने अपना सब अपने अपने घर जाओ. जो पार्टीशन होती है विच इज बेसिकली डिवीजन ऑफ राइट्स, इट इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 5. सेक्शन तो बार बार आपको कोट करना ही. सेक्शन 5 के अंदर भैया जो आपकी जो पार्टीशन है, दैट इज मियरली अ डिवीजन ऑफ राइट्स, इट्स नॉट अ ट्रांसफर ऑफ राइट्स. सी हाउ लॉ वर्क्स. वी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस है यार ये कैसे हो रहा है, इतना राइट दे तो दिए, हो तो गया ट्रांसफर. उस सेक्शन के हिसाब से नहीं हुआ जी, आपके हिसाब से हो गया. लेकिन लॉ में आपने सेक्शन के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से चलना है. जज साहब किसकी सुनेंगे? किताब की सुनेंगे, आपकी सुनेंगे? ऑब्वियसली किताब की सुनेंगे. सो इट्स अ डिवीजन ऑफ राइट्स, इट्स नॉट अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी. द केस लॉ दैट इज गिवन इन योर केस मैट एंड आई एम teaching for DU, so I think pretty much the cases are same everywhere. It's VN Sarin versus Ajit Kumar Poplai. पंजाबियों में से सरनेम पोपली होता है, पोपलाई लिखा हुआ है यहाँ पे. We're going to get into the case law next time around, and yeah, pretty much I'm just reviewing कि कुछ रह तो नहीं गया या कुछ नहीं. Now you are going to do a bit of homework and you're going to tell me, does this constitute a transfer of property under section 5 of the Transfer Property Act? PG bit जब आप लीज एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं. So we are now clear कि इंटरेस्ट तो जा ही रहा है, इंटरेस्ट तो वो ट्रांसफर कर ही रहा है ना सामने. Does it constitute or does it not? Leave a comment. We'll discuss in the next one. All right. Take care. Bye-bye.